It is another question on arithmetic progression. What is given the sum of n, 2n, 3n terms of an APR S1, S2 and S3, then we have to prove this S3 equal to 3 times of S2 minus S1. Let A1, A will be first term of AP and D will be common difference. Okay. Then therefore S1 is equal to sum of n terms, which is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Similarly, S2 equal to sum of 2n terms, which is equal to 2n by 2, 2a plus 2n minus 1 into d. Similarly, S3 will be sum of 3n terms, which is equal to 3n by 2, 2a plus 3n minus 1 into d. यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड. Now what we have to find? S2 minus S1. This implies that S2 minus S1 will be equal to, subtracting equation first from second. What is the second equation? 2n divided by 2, 2a plus 2n minus 1 into d minus n by 2, 2a plus n minus 1 into d. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. Then it will be 2 times of an plus n times of 2n minus 1 into d minus 1 by 2, 2an plus n times of n minus 1 into d. यहाँ तक क्लियर है? अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा इक्वेशन रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? n by 2, 2a plus 3n minus 1 into d. ये हो जाएगा. यहाँ से n कॉमन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, 3n बचेगा मेरा और d से d कॉमन आ जाएगा. तो ये मेरा रिड्यूस होके आ जाएगा. क्या रिड्यूस? इसका वैल्यू ये S2 माइनस S1 का. तो अब मैं इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1 विल बी इक्वल टू 3 by 2n ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d. इसको इक्वेशन में मान ले रहा हूँ 4. If we compare from equation third and fourth, what we get? 3n by 2, 3n by 2, 2a, 2a, 3n minus 1, 3n minus 1 and d. This implies that S3 will be equal to 3 times of S2 minus S1. Hence, we have proved this. If you like the video, thumbs up. Please share the video and support us. Thanks for watching. Bye.